going to present on classroom management. This session is about classroom management. Now, you must be thinking कि classroom management की क्या ज़रूरत है? Because every day we are going to our class and why it is necessary? और हम लोग तो management के students तो है ही नहीं है और we are not dealing with management students. But जब हम लोग क्लास में जाते हैं तो हमारे पास इतने सारी चीजें होते हैं या we have to deal with many things. We have to manage with many things. For example, we have to manage with time management, activity management, class environment management, again with our native language. Means we have to manage all these things. So कि ये सब चीजें तुम लोग करते भी होंगे. These are the only basic things what I'm going to tell you. First of all, the profession what we have choose. This is the noblest profession, I will say. Because teacher's profession, when anybody, what they think that teachers को क्या है, क्या सिर्फ क्लास में जाना है, पढ़ाना है, उनके पास तो कुछ काम नहीं है. हम लोग ऑफिस में जाते तो ऑफिस में इतना सारा काम होता है, इतना मैनेज करना पड़ता है. बट जब हम लोग टीचर्स प्रोफेशन बोलते तो हम लोग को उनसे ज्यादा मैनेज करना पड़ता है. हम लोग को we have to totally change our environment. We have to totally change our personality. We have to think according to the student. Then we have to talk with the student. तो हम लोग को ये सब जो चीजें हैं, ये चीजें सीखने के लिए जरूरत होती है. और टीचर्स प्रोफेशन में ऐसे होता है कि हम लोग हर एक बच्चे मीन्स इन अ क्लास वी विल कंसिडर नियर अबाउट 50 to 60 स्टूडेंट्स और 50 to 60 स्टूडेंट्स से डील करना, it is not an easy task. For that, there is lots of preparation. So what first of all we should think, this is one picture which is displayed on your screen. You can zoom it if you are using mobile screen. इसमें teachers and students role दिखा है. तो इसमें से अपने को ये we can understand that कि teachers and students role. If you'll go through the picture very minutely, you will find that the role of teacher is more than the student's role. If you'll go through the wheel only, I'm going to take one example here, front wheel and back wheel. In that, here we have to plan more as compared to students. And here, if we will plan more, then our work will or our burden will be less. But here, students have to do more. And throughout the picture, if you go through very minutely, we can see that teacher work is management is the practice and procedures that allow teachers to teach and students to learn. We have to go through some practices and procedures. If we will have our own system, as every year when we are having audit, in that audit we are told SOP banao. Means everything, for every work there should be SOP. If we will have SOP, then we will be used to that. And if once we are used, then again, simultaneously students will also get into that. So for this, it is necessary. There should be some procedures. There should be some practices of every teacher for every class so that the workload will be less as you have to go from year to year, or if you go from class to class, then the workload will be less if you'll have your own practices and procedures. Now I'll show you some more. From that you will come to know that what practices or what procedures can be implemented among you so that the workload or the work of the class will be easier to handle. First point is that command over subject. This is the basic thing or the main part of our teaching this. Command over subject means as every teacher is allotted one or two subjects. Okay. So for that, it is necessary that whatever subject you have chosen, for that we have to be prepared before entering the class, or we should have command over that. We have to go thorough in that subject. अगर हम लोग उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे या उस सब्जेक्ट में अपना डीप नॉलेज होगा, तो हम लोगों को जो भी क्लास में जाने के बाद जो प्रॉब्लम्स आता है गैप फिलिंग का, ये सब प्रॉब्लम आएंगे. और कितने भी साल होने दो,
whatever experience you're having, you have to prepare every day before going to the class. तो सबसे पहले है that you should have command over the subject. Then you should have good lesson plan. Every day if you, as you go to the class में जाने के बाद जो lesson तुम लोग तैयारी करते, that preparation should be up to the mark. And after going to the class, उनको recollect होने देने का, then we should proceed to the next topic. And other thing is that the next one is language, command over the language. This is very important. Command over the language. See, as we are from other places, we are having our own mother tongue. Which, what language you're speaking in the class? Many times what happen, every teacher is from some other locality. तो उनका जो words जो बोलने का है, तो that has to be proper, such as words. यानी अपन जो भी words use कर रहे, अरे क्या रहता है को समझता नहीं क्या? Don't use all these things. You have to say very polite. Your tone should be very low. If you're talking with the students, your speech should be clear, and try to avoid grammatical mistakes. Again, see, here you should be having good command over the subject. You feel you will be having good command over the subject, then there will be good language also. यानी अपना कमांड सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा तो अपना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कम होंगे और अपना जो बोलने का तरीका है उसमें भी चेंजेस होंगे. तो ये जो चीजें हैं दैट यू हैव टू थिंक बिफोर स्पीकिंग. एंड प्रॉपर सेंटेंसेस, when you're using your language, there should be in a proper way. There should not be your sentences or whatever language you're speaking, it should not have any double meaning, so that फिर बच्चा ऐसा सोचेगा टीचर ने मुझे उस मतलब से बोला था, इस मतलब से नहीं बोला था. तो there should not be any double meaning in the sentences. The sentences should be clear so that students will take in one proper way only. Okay, so this is what teacher should have good command over the subject. If teacher will have good command over the subject, then there will be no problem in her language. And next point we will go, that is discipline or our approach. See, discipline हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि अरे तेरे को समझता नहीं क्या, थोड़ा तो डिसिप्लिन में रहते जा, थोड़ा तो टाइम पे काम करते जा, और some other point. तो इसके लिए for this we should have our own discipline. When if a student comes late to the class, बार बार लेट आ रहा है, तो अपन उसको बॉय और गर्ल टेस्ट, नहीं टीचर मैं साइकिल से आता हूँ, आते समय सिग्नल लगता है, भीड़ होती है, इसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ. बट व्हेन यू आर सेइंग कि तू लेट होता है तो को समझता नहीं है, तो टाइम पे आना चाहिए. बट हियर यू हैव टू थिंक दैट स्टूडेंट्स आर ऑब्जर्विंग अस वेरी माइन्यूटली, यानी देयर आर 50 to 60 आईज ऑन अस, कि वो देखता है अरे टीचर जब स्कूल में आती है ना वो खुद ही भाग भाग के आते हैं. They don't come to the school before time. They are always in a rush. Then how can this teacher can tell to me कि ये कैसे क्या बोल सकते कि तुम टाइम पे आओ. तो here when you want to inculcate some discipline among students, for that we have to have our own policies. अपने खुद के एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जब हम तभी हम लोग बच्चों को बोल सकते हैं. क्योंकि मैनी टाइम्स ऐसे होते हैं, क्या रे तुम लोग क्लास में कितना शोर शराबा करते, मैं नहीं रहता तो आवाज करते, जोर जोर से बात करते हो. बट दे आर सीइंग कि हम लोग खुद क्या करते हो. तो एज यू एंटर इनटू द स्कूल कैंपस, फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इट इन योर माइंड दैट जैसे ही स्कूल के बिल्डिंग के अंदर देयर वी आर अ टीचर. तो उसमें मुझे मेरा स्वभाव सोचने से ज्यादा आई हैव टू थिंक अबाउट स्टूडेंट्स. Every action, every movement is observed by the students and they will follow in the same way. तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि अपने एक्शंस, अपने तरीके जो भी कर रहे हो स्कूल के अंदर आने के बाद, that we should think as per students, not as per my. Another thing is that our approach or our frame of mind. Many times this happens
कि हम लोग अपने खुद के फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, या कुछ वर्कलोड होता है, बहुत वर्कलोड होता है, तो हम लोग इतने चिड़चिड़ करते क्लास में जाने से या क्लास में जाने के बाद. तो दिस थिंग शुड नॉट हैपन, बिकॉज दैट वर्कलोड, दैट फ्रस्ट्रेशन इज ये अपने का, ये बच्चों का नहीं है, क्योंकि हम लोग 50 से 60 बच्चों को डील कर रहे हैं एक साथ. And if I will put my frustration or my stress and I will show my own anger on the student, so what they are going to learn, that this teacher or this teacher is not having control on his mind. So this is, here it is necessary that we should have control on our anger or our attitude or our approach towards the students. Okay, next one is be an authority. Sir, slide hai na? Slide. Okay, next one is be an authority. As you enter in the class as a teacher, you should feel that I am the authority of this class. I am whole and soul, means I am the responsible person. For that, it is necessary कि हमको अपना confident रहना चाहिए. अभी again यह confident कब आएगा? जब अपना command रहेगा subject के ऊपर, जब अपना command रहेगा language के ऊपर, और जब when we will have our own discipline, when we will have our own attitude, good attitude, positive attitude, then we will have more confidence in the class. So for this, it is necessary that we should have command, language, subject, and discipline. So you should be an authority in the class. For this, it is necessary you should be confident. Other thing that you should have patience. बहुत बार ऐसे हो जाता है, जैसे ही क्लास में जाते हैं तो क्लास में इतनी गड़बड़ होती है, because by the time we reach to this class, students are having fun of their own, और अपना अलग एक मूड में रहता है कि हम लोग हमारा पोर्शन कंप्लीट करने का है. तो वी डोंट हैव एनी पेशेंस कि हम लोग बच्चों को शांत कराओ, चुपचाप बिठाओ, फिर उसके बाद अपना पढ़ाई शुरू करें. नहीं, वी ओनली थिंक कि मुझे मेरा पोर्शन कंप्लीट करने का. तो डायरेक्टली वी टेक आउट बुक and we start reading, going towards our portion. So these things should not happen. You should have patience. You should control the students. Here you can use different techniques to control the students, because each and every teacher has their own techniques and has their own dealing ability. So teachers can deal according to them. So you should have patience. Other thing is that you should be firm and fair. क्लास में जाने के बाद अच्छा ठीक है आज तूने, व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग टू द स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट आके बोलता है कि टीचर इसने कल इसको मारा था. तो हम बोलते हैं बिकॉज वी आर इन अदर मोड, ठीक है चलेगा. नहीं, हियर यू शुड बी फर्म दैट if a child bring anybody's complaint, there we have to deal with that complaint, and we should be firm in our decisions also. कि अगर मैंने सोचा है कि आज अगर मेरा क्लास शांत चाहिए और मस्ती कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, then my decision is always that I will give some punishment. That punishment may be different from teacher to teacher. कोई फिजिकली पनिश करता है, कोई मेंटली मीन्स लिखने का, लर्न करने का, मीन्स लाइक दिस. Everyone is having their own. So you should be firm in your decision. जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम हमारे बुक ले रहे हैं और पढ़ रहे and we are explaining, and if I am teaching something and I'm writing on the board, I'm writing eye contact with the students. हम लोग सिर्फ अपना ही सोच रहे और अपना ही काम खत्म करने का. तो इसमें ऐसे नहीं, हम लोगों को we should have पढ़ाते से when we are going through any lesson, we should see to each and every student, नजर से नजर मिलाओ. So by that time, within 2 minutes, all students will sit quietly and listen to you very carefully. So it is necessary that we should have proper eye contact. So if we will have proper eye contact, again here the control of the class will be less. Other thing is that we will do
Next one, that is when you are going to the class or you are teaching to any, हम लोग जब स्कूल में आते हैं, our dress is very important. Whatever dress you're wearing, it should be up to your profession. ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ तो भी पहन रहे. Or in today's situation, it is happening that we are of new generation, so we are not used to all that traditional dress, but still it's okay. But whatever dress we are wearing or however we are coming to the school, it should be clean, ironed and well appearance. तो इसके लिए ये जरूरी नहीं कि मैंने बहुत महंगा कपड़े खरीदना चाहिए, बहुत महंगे मटेरियल रहना चाहिए. नो, बट whatever dress you're wearing, that should be in a proper way. तो जैसे ही तुम लोग क्लास में जाओगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा. Many times it happens कि अगर हम ऐसे पहन के आए और एकदम प्लेजेंट मूड में रहे, then see, when we come in a proper and in a appropriate way, then at that time even students feel very nice. So for this it is necessary that again here you can keep variation. If a teacher is of pre-primary, their students want teacher should be more active, her dress sense should be different. Again, as we go to the higher classes, secondary section, there our dress sense means we should be in a decent way. The dress should be in such a way that students should not get distracted. Next one is that class environment. सर आप आगे के स्लाइड में गए, पीछे जाइए. This one? नहीं, बैक वन, बैक. ये पीछे वाला, इसके पहले वाला. नहीं पीछे. हाँ. नहीं सर, हाँ ये बराबर. Class environment. Now this is the main thing. Many times as we go to the class, तो हम लोग देखते अरे बाप रे कितना गंदा क्लास है. And what we do, कुछ बॉदर नहीं, ठीक है गंदा है ना, मुझे मेरा पोर्शन कंप्लीट करना है. Then we start reading. So these things should not happen. जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं तो class should be clean. And if you'll start your continuing your portion, तो students क्या देख रहे हैं कि टीचर को भी परवाह नहीं है, टीचर भी इसमें कर रहे. And you must be thinking ये मेरा काम नहीं. Yes, it is right that this is not your teacher's work. This is the work of other person. But still it may happen कि कभी रह जाता है, कोई आया नहीं है, कुछ डिले हो जाता है. तो in that place you have to take initiative. तुम लोगों ने इनिशिएटिव लेने का और कंसर्न पर्सन को बुलाने का, क्लास क्लीन करवाने का. तो इससे क्या होता है, बच्चे लोग ऑब्जर्व करते और सीखते कि नहीं, टीचर इज टेकिंग इनिशिएटिव, टीचर इज गेटिंग द थिंग्स वर्क डन. तो इसमें क्या होता है, बहुत अपन ने ये याद रखना चाहिए, अपने वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस आल्सो स्पीक्स, एंड दैट एक्शन इज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द स्टूडेंट unknowingly, which is not known by us. So cleanliness is very important. Other thing is that sufficient light. Class में light. Again here, it is the responsibility of the schools में lights नहीं है, कोई classrooms में windows proper नहीं है. So you should inform to the person. और बहुत बार ऐसे होता है कि teachers don't want more light, but there are 50 students. Everyone's eyesight may be different. सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है. तो हम लोगों ने बच्चों के हिसाब से सोच के सफिशिएंट लाइट तो बहुत जरूरी है. एज आई टोल्ड यू कि हर बच्चे का आईसाइट डिफरेंट होता है. तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, क्लास में मुझे इतना सफिशिएंट लाइट है. नो, वी शुड नॉट थिंक अबाउट आवरसेल्फ, वी हैव टू थिंक अबाउट 50 to 60 students. And then according to that, you should see that your class is having sufficient light. Airy, the class should be good. Airy also. Many times it happens, teachers classrooms का दरवाजा बंद करते, खिड़कियां बंद कर देते. तो इसमें ऐसे हो सकता है कि बच्चे लोगों को uncomfortable लगे. So see that these things should
consider also. Other thing is that क्लास में जो भी है कुछ इंफॉर्मेटिव चार्ट्स जिससे ऐसे लगे कि बच्चे लोग क्लास में घुसते ही कि एवरी डे दैट शुड गो अंडर द थ्रू देयर आईज, सो automatically they start memorizing also. So some informative chart and some charts which has been prepared by the students, that also you can display in the class so that the class will look more attractive. In this class environment, sitting arrangement is also one of the big thing. बहुत बार ऐसे हो जाता है कि टीचर्स सोचते कि अरे she enters, I'm talking about other teachers also, not class teacher but subject teachers, second third fourth period में बच्चे लोग अपनी अपनी मर्जी से इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं and teacher is busy in teaching. But what teacher should see कि मुझे मेरे नजर के सामने हर एक बच्चा दिख रहा है कि नहीं, that teacher should think. ऐसे हो जाता है कि ठीक है कोई बच्चा एक कॉर्नर में बैठा है, कोई एक बच्चा दूसरे कॉर्नर में बैठे हैं, जो सिंसियर बच्चे वो सामने के रो में बैठे. नो, as you go inside the class it will take hardly 1 minute. Quickly you should tell the student that all students should sit in front of blackboard, they should not get scattered. तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है प्रॉपरली करना चाहिए. और एवरीडे अपन देखते हैं कुछ बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, कोई बच्चे पीछे बैठते बुक्स नहीं लेके आते. देन यू कैन चेंज देयर प्लेसेस. यू शुड आस्क देम टू सिट इन फ्रंट. यू शुड टेक द इनिशिएटिव. और उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि टीचर का पूरी तरह मेरे ऊपर ध्यान. तो जैसे अपने को बोला जाता है कि एसओपी ऑफ एवरी वर्क देयर शुड बी एसओपी. सो इवन एज अ टीचर यू शुड हैव योर ओन एसओपी. सो देयर शुड बी प्रोसीजर एज यू एंटर टू द क्लास. आजकल तो बच्चे एकदम बिंदास है, दे आर लीस्ट बॉदर कौन सी टीचर आई कौन सी टीचर गई, नथिंग. दे आर बिजी इन देयर ओन वर्क. सो एज वी एंटर द क्लास टीचर शुड ग्रीट देम. भले ही बच्चे ग्रीट किए कि नहीं किए, teacher should greet, say good morning, good afternoon, whatever the time is there. So greeting is one thing. Next thing is that attendance. When you're taking attendance, it has been observed that teacher is taking attendance 1 2 roll number 1 2 3 4 5 इस तरीके से बोलते हैं. And what students is giving the answer present present present. तो ये जो है देयर इज, इससे ये समझ में आता है ना neither teacher is involved in among the student nor students are involved among the teacher. So it is necessary that you should call out the names of the students. जितना तुम लोग बच्चों के नाम बुलाओगे उतना क्लोजनेस बढ़ेगा. Here I want to tell you one small incident. As it is about my personal only, I was we were transferred and I came from my native place. And when I came to Maharashtra, hardly I was in, I think, 4th or 5th standard. And as a student, I was very shy student. I never used to speak in the class. I never used to do any destructiveness in the class. And one day our classmate decided कि अपन आज ना अपनी जो XYZ टीचर है उनका बर्थडे है तो हम लोग सब उनके पास जाएंगे, उनको विश करेंगे. Then I told it's okay. Even I was ready. Then we went to teacher's place. टीचर के घर जाने के बाद टीचर was very happy. बोले अरे वाह, such a small students came to my house and they are wishing me. She was also very pleasant. And she started serving some snacks to us. And she came to me and she told me, Jaya, will you have juice or this? I means मेरे कानों में जो उन्होंने बोला कि स्नैक्स का क्या ऑफर किया वो नहीं, बट शी कॉल्ड मी बाय नेम. तो मुझे जैसे ही उन्होंने बोला कि जया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. दैट क्लोजनेस क्रिएटेड बिटवीन मी एंड माई टीचर. सो whenever you're calling your student, try to call by their name.
I will say don't call by surname also. I will say to call by name itself. तो जब बच्चों के नाम से आवाज देंगे तुम लोग तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा और ज्यादा क्लोजनेस आएगा. So it is necessary that you should, and it is, I know that it is very hard to remember students' name also because you're dealing with 4-5 classes, every class 50 students, near about 200 300 students are there. But you can use different techniques. Next one is you can use everyday good thought. Class में good thought बोलना जरूरी है, and that can be connected to your students' activity. Collecting homework. Now this should be a procedure. क्या हो जाता है कि आज हम लोग पढ़ाते और बच्चों को बोलते चलो ये तुम्हारा टॉपिक है, दिस इज योर होमवर्क. अगले दिन आते हम लोग कुछ देखते नहीं, वी आर बिजी विथ अवर पोर्शन. नो, here you have to keep an habit, keep a procedure that you should collect your homework daily. Now it is not easy, even I can understand. तो इसके लिए many techniques you can use. रो मॉनिटर्स बना दिया. रो मॉनिटर्स को बोल दिया कि बिफोर आई एंटर इन द क्लास you just go through the row and see whether homework is done or not. Only done or not. Don't ask them to check. किया कि नहीं किया. ऐसे कितने रोज होते हैं? 4 rows. Then as you get into the class, you get the report from the row monitors. They will tell you, teacher, these student have not done the homework. Then what? You will get the report and you can take some action. So from these, what it will happen, it will create an habit among the student कि हमारे बुक्स तो चेक हो रहे या हमारा इनकम्प्लीट वर्क टीचर के पास जा रहा है. So this procedure should be there. Other thing is that you should have interact with the student. बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग पढ़ाए और निकल गए. We don't see. जैसे अपन अटेंडेंस लेते तो अपन ने देखना चाहिए. Attendance should be taken by the teacher itself and she should see कि कोई बच्चा है कि वो irregular है तो उससे पूछो क्यों irregular है, क्या है, whether health issue, whether some other reasons are there. So from this what it will happen, you will create bonding with the student and again you will come to know. Next again, practice and tradition. Now it is said that if a classroom in a classroom, if there is some celebration, some activities are done, then it create a family type of environment. Now how does it create a family type of atmosphere? You can do small activities such as you can celebrate students birthday. Students को बहुत अच्छा लगता है. There are 50 students, only what you have to do, don't give them gifts, I'm telling, but call them and tell all of them, see today is Sham's birthday, wish them. ऐसे होता है ना, टीचर्स डे के दिन हम लोग कंप्लेन करते, देखा कैसी क्लास है, किसी ने मुझे विश भी नहीं किया टीचर्स डे का और किसी ने मुझे एक फूल भी नहीं लेके आके दिया. बट हाउ दिस विल गो इन देयर हैबिट? फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट दैट हैबिट. हम लोग उनके सेलिब्रेशन कर सकते तो बच्चों लोगों को लगेगा yes, this is our customs, this is our tradition, this is our class practice where we have to go to the teacher and we can wish that. तो ये अगर एक्सपेक्ट करते तो हमको बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा. We can't directly expect from the school. Other thing is that we can ना एक ही मैसेज करते, फोन करते, your child is very worst, पूरे स्कूल को डिस्टर्ब करते. But here we can have one practice. We can send even positive messages to the parents. हम लोग ऐसे बोल सकते, मैंने ये तुम्हारे बच्चे को देखा पूरे महीने भर में, in the month of starting month he was very shabby. Now he has improved in his dress sense. Now he has improved his language. Like these positive messages we can send to the parents. So due to this, what it will happen, students will also have
good bonding with the teacher and they will also improve. Then we can show some motivational movies. कुछ movies ऐसी दिखा सकते हैं, जैसी हेड ऑफिस से जैसे आपने को आया था कि उरी पिक्चर दिखानी था, इट मेड वेरी सक्सेस. तो इससे क्या होगा कि बच्चे लोग के साथ हम उस मूवी देखेंगे, then they will also feel. And before showing that movies, whatever movies you want to show, तो हमको उनको एक पहले जिस्ट बता देने का. Then what will happen कि बच्चे लोग उसी एंगल से देखेंगे. Suppose if I want to show students Super 30, here I don't want to tell students what teacher is doing. I want to tell the students, see how students are there, how they are changing, or how even from any background student can achieve anything. Here I have to tell that. But if I want to show the same movie to the teacher, then what I will tell? I will tell to the teacher, see the role of the teacher. So here, whatever movies, whatever motivational movies you want to show to the students, tell them some gist. Then they will see according to that angle and they will get inspired. Next one problem comes, that is the misbehavior of the student. So here many times happen. There are means in every class, if there are 60 students, 60 students में से ऐसी होता है कि 5 या 8 बच्चे इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इतने मस्तीखोर होते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ we have to think on that part. It was said that a teacher once said, if it was not documented, then it didn't happen. It means that whatever misbehavior is there, that has to be documented. अगर अपन डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे हमको क्या पता कि ये हुआ या नहीं हुआ. So whatever happened. So here we can differentiate between minor and major misbehavior. तो इसके लिए इतना जरूरी नहीं कि टीचर क्लास में जाते. तो see, minor misbehavior, when it happens, again it comes to our first point, that is command over our subject. अगर हमारा कमांड रहेगा सब्जेक्ट के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, then here minor misbehaving will not be seen in the class. और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग पटापट बढ़ा देते हैं पोर्शन and 5 minutes are left, and in that 5 minutes students create havoc in the class. तो here teacher should have gap filling. अब ये gap filling का मतलब ऐसे नहीं कि 5 मिनट बच गया चलो students go for playing. No, because you are making fun. So 5 minutes you can extend your topic, you can give them some moral thoughts, or you can give some suggestions या guidance that should be prepared. तो ये जो gap filling है वो करना जरूरी है, but it should form of some other activity जिससे बच्चों को ऐसे पता चलेगा कि नहीं टीचर का पोर्शन भी हो गया या क्लास में हम लोगों ने मस्ती भी किया तो भी हम लोग को टीचर छोड़ने वाली नहीं है. And they come to know from day one itself कि how much command is there on in teacher's subject and type of language. Many times it happen कि अपना कमांड भी नहीं रहा सब्जेक्ट के ऊपर, but our language is very good, very soft, very nice. Even student consider that teacher. Even student don't misbehave with that teacher. तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं. नेक्स्ट वन दैट इज वी शुड नॉट हैव एनी फेवरेटिज्म. बहुत बार ऐसे हो जाता है कि क्लास में जाते हैं पूरी क्लास मस्ती कर रही है, गर्ल्स आर इन्वॉल्व, बॉयज आर इन्वॉल्व, एवरीवन यूजिंग पेपर बॉल्स एंड एवरीथिंग, एंड वी आर सीइंग. जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं तो एक सेकंड के लिए अपने को सीन दिखता है, बट हियर व्हाट वी डू, वी विल मेक ऑल बॉयज स्टैंड अप एंड बोलते चलो फटाफट यू आर पनिश्ड. बट नो, here favoritism should not be there. Girls are involved, so even girls should get the same punishment, boys should get the same punishment. जहाँ पे हम लोग differentiate करेंगे, that will create problem. So there should not be favoritism. Other thing is that again ऐसे होता है कि नहीं वो बच्चा ना पढ़ने में बहुत अच्छा है, then we should not punish him. No, what he has done mistake means it is a mistake, whether that person is a boy, girl, or very extraordinary intelligent. No, mistake means mistake.
So that should be considered. Mistake को जो भी आप तुम लोगों का punishment का criteria, that it is up to you, but that should be equal. Last one I would like to say that is consistency. अभी जैसे consistency है, class, your subject, command over subject, command over language, discipline, procedures, practices, traditional behavior, means all these things, what class activities, class culture is there, they should be consistency. ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है यानी इन द मंथ ऑफ जून हम लोग इतना मेंटली स्ट्रांग रहते हैं कि मैंने इस साल का ये पॉलिसीज डिसाइड किया है एंड उसके हिसाब से मैं बच्चों से ट्रीट करूंगी. फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ हुआ कि नहीं, बाय द फोर्थ मंथ अपना काम भी स्लो हो जाता है एंड अगेन यू विल फाइंड द स्टूडेंट्स आर गोइंग इन द सेम in the different track. So for this, if we want that students should be in a good manner, good well behavior throughout the year, for this in our work there should be consistency. Again, for this also you can do that student of the month also you can keep it in your class. हर महीने में मैंने सोचा है कि अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट इज वीक मीन्स बहुत उसको लिखना नहीं आ रहा है, वर्ड्स बहुत मिस्टेक कर रहा है, तो अगर उनको उसमें चेंजेस दिख रहा है महीने भर में, देन यू कैन से दिस इज द स्टार ऑफ द क्लास. These changes I have seen means he was able to write only 4 word spellings, now he is able to write 7 word spelling. Smaller चीज ने डायरेक्ट हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं करने का कि बच्चे ने फर्स्ट रैंक लाना चाहिए या he or she should get A+ grade. No. So you can keep in your class student of the month. Every month the criteria may change. तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कंसिस्टेंसी भी रहेगा, क्लास कंट्रोल में भी इजी रहेगा एंड योर क्लास रूम मैनेजमेंट विल बी वेरी इफेक्टिवली. सर लास्ट वाला स्लाइड दिखा दीजिए. Students should feel teacher as a motivator, guide, mentor, philosopher, counselor, and godfather. So whenever students are coming to the school, they should feel all these things among the teacher. Then only it will not have any classroom problem. See, many points I have tried to cover up, but it is not possible in a half an hour or 1 hour. Many points I tried, but every teacher, as I told in the beginning also, every teacher is having their own ways of classroom management. And it gives effect to the students also. It is not necessary that we should say, हाँ वो teacher का ये management है, तो then I should know. It is the quality of the own teachers. So it depends.